Let's start then. So we have owner. Under subscription, we have owner. Let it appear. We have contributor and we have reader. Full access. Contributor. Full access. Except one exception is there, which is here it is. Owner has a full access to manage all resources, including the ability to assign roles in Azure RBAC. Contributor has full access to manage all resources, but does not allow to assign roles in RBAC. Full access, however, cannot assign roles. Then we have reader. Full access. However, read only. Or full read only access. This would be the correct. मतलब हर resource देख पाएगा, but सिर्फ read only mode में. And these are called RBAC, which is resource based access control. So RBAC is different and Azure Active Directory is different. I will be using these two terms and you will be hearing whenever, be it this training or any other training or interview या कुछ भी हो, you will be hearing these two terms. RBAC. So the moment you hear RBAC, you should understand कि हम यहाँ की बात कर रहे हैं, subscription, resource and resource groups, IAM ये बात कर रहे हैं. The moment you hear Azure Active Directory, you should understand that we are talking about this panel, Active Directory वाला ये. Is it clear, guys? Still here? Yeah. Okay. So यहाँ पर है owner, contributor and reader. So who could be the owner? I told you that this is the first time your company is planning to purchase something. Azure Active Directory का Azure का जो है subscription purchase कर लिया, वो आपका कोई director level का बंदा होगा, कोई ऐसा होगा. They purchase it, but they do not plan to work, right? कोई director बैठ के यहाँ पर portal पे काम नहीं करने वाला है. Then he will assign an owner. उस subscription पे एक owner को assign कर देगा. So now this is my subscription. Let's say XYZ user who's a VP or upper management. They went ahead, they created their account and they purchased one subscription. This is their subscription. अब काम भी तो करना है इसमें, right? So they will go to IAM, which are RBAC roles. They will give access under this RBAC. किस चीज का access देंगे? Let's say he was a director or an owner of the company, and now he wants to give this access to his CEO. So he will make that CEO as an owner. Or that VP, let's say इस level पे VP की बात करते हैं, or maybe a senior program manager, which is this user, admin user, जो अभी हम लोगों ने new user create किया है ये वाला, right? So I have given access to this admin user as an owner on my subscription. I click next, review and assign. So a role is being assigned to admin user, which has been done now. If I come here to my incognito mode, and if I go to home, I think I'll have to refresh once or maybe log out and log in, but we'll see that. Okay, can you guys see now that I do have access here to check the subscription? This is admin user. I did not have access earlier, and now I do have access. Which access I have? Owner access. And if you guys realize, यहाँ पर मेरे इस subscription, if I go to my Tsoft Info Solution, I have three resources. Sorry, three subscriptions I have. But admin user को मैंने सिर्फ एक का दिया है, तो admin user को सिर्फ एक ही subscription दिखेगा. He still doesn't have any access on these two subscriptions. Is it clear, guys? Are you guys getting it?
Yes, sir. What about others, guys? Is it confusing? Is it clear? Do you have any questions? कुछ question है अभी तक? Sir, but can you please explain one more time? Sorry. Can you please explain it one more time? Which one? Are you clear till Active Directory? कहाँ से नहीं समझ में Yeah, आया yeah, मुझे? yeah. Only that this part, the subscription part, which you assigned. Okay. Anyone else who did not understand? इसके अलावा भी कुछ इससे पीछे कुछ? भाई I have one question. Yes, Jafar bhai. ये ओनर वाला जो रोल है, is it like only one user can be the owner and the rest of them will be the, I mean, they won't have the role of the owner? Yes, good question, Jafar bhai. I will answer that. Anyone else? Any other question? Okay, so let's start with these two questions. First, I'll answer Jafar bhai's question. No, Jafar bhai, it is very simple. You can have multiple. Now, being an owner, I can go here, I can click on IAM, I can add, assign a role, and I can assign this owner role to someone else also. That does not mean it will take away my role. Let me search. Let's say this ABC user. Select, assign. Now this subscription has 2 owners. So that is fine. You can assign owner role to multiple users at a time. Clear, Jafar bhai? Or for that matter, any role. And it is not possible to have a role. एक पे एक ही को दे देगा ना, तो contributor कौन होता है पता है? Contributor आपके ये हो गए जो इंजीनियर्स वगैरह होते हैं ना, जो काम करने वाले हैं, जिनको मशीन उसमें बनानी है, स्टोरेज बनाना है, तो अगर एक रोल पे एक ही अगर हम देंगे तो पॉसिबल ही नहीं होगा. सो इट कुड बी एनी रोल. यू कैन असाइन मल्टीपल यूजर्स टू एनी रोल. ठीक है? Okay. Okay, coming back to the subscription. I hope Azure Active Directory यहाँ तक clear है. So I was explaining सब्सक्रिप्शन पे कैसे रोल्स लगते हैं, एंड दैट सब्सक्रिप्शन रिसोर्स ग्रुप और रिसोर्सेस इन पे सेम ही रोल लगते हैं, बट अभी ज्यादा कंफ्यूजन ना हो इसलिए अब तक मैंने रिसोर्स ग्रुप की बात नहीं की. बट पहले हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे एंड देन इसको कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे. पहले इसको आइसोलेशन में पढ़ेंगे तीनों को, एंड देन कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे, एंड दिस विल बी क्लियर फॉर यू गाइस. एंड देन उसके बाद हायरार्की भी पढ़ेंगे हम लोग इसकी. बट लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन. द सब्सक्रिप्शन वाला, सब्सक्रिप्शन पे जो रोल्स असाइन होते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी पे जो रोल्स असाइन हो रहे हैं, दे आर कॉल्ड Azure एक्टिव डायरेक्टरी रोल्स. सब्सक्रिप्शन पे जो रोल्स असाइन हो रहे हैं, दे आर कॉल्ड RBAC, रिसोर्स बेस्ड एक्सेस कंट्रोल. ठीक है? एंड दे आर बीइंग असाइंड बाय IAM, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट. ये ऑप्शन यूज करते हैं हम लोग. किस तरह के रोल्स होते हैं? देयर आर प्लेंटी ऑफ देम, और इसमें कस्टम रोल्स भी बनाए जा सकते हैं. लेट्स से कि इसमें भी आपको, आप जो रोल ढूंढ रहे हो ना, ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है. यहाँ पर आते हो आप, ओनर में क्या है? फुल एक्सेस. नो, आई डू नॉट वांट टू गिव फुल एक्सेस. कंट्रीब्यूटर में क्या है? फुल एक्सेस बट कैन नॉट असाइन अनदर एक्सेसेस. नो, आई डू नॉट वांट दिस वन आल्सो. रीडर में क्या है? कैन गिव ऑल रीडर्स. नहीं, ये भी सूटेबल नहीं है, मुझको थोड़ा ये भी देना है, राइट वाला एक्सेस भी देना है. देन ACR डिलीट में क्या है? दे कैन डिलीट ACR इमेजेस. ये नहीं. सो यू गो थ्रू ऑल दिस एंड यू थिंक कि यार नहीं, इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है, मे बी आई वांटेड अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एंड दिस एंड दिस. So you can create your own custom role also. We'll see that later how to create, but keep this in your mind that you can create a custom role as well. It is not necessary to use only these roles. लेकिन इसमें इतने options होते हैं ना कि आपका requirement fulfill हो ही जाता है. Do you see कितने सारे options है इसमें? ठीक है, but majority हम यही use कर रहे हैं, owner, contributor and reader. ठीक है? So again, explaining this, so these are called RBAC roles. RBAC roles क्या होते हैं? These are on subscription, resource groups and resources. The moment we talk about resources and ये सब, तब आपका RBAC role picture में आता है. A user comes and tells you that I am a global administrator. I can create users, I can delete users, I can reset passwords, but I am unable to create a virtual machine. And that time you realize that he doesn't have any access on any of the subscription. So you could go to that subscription
and you can give that user access. अब किस तरह का access देना है वो सब आपके टिकट में आ जाता है, मैनेजर की डिटेल्स होती है कि इसको कंट्रीब्यूटर का रोल देना है, ही इज एन ओनर, या किस तरह का है। या फिर जैसे पहला एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे थे कि आपके कोई वीपी वगैरह ने परचेस कर लिया है, नाउ ही वांट्स यू टू टेक केयर ऑफ इट, आगे काम करना है किसी सीनियर मैनेजर या प्रोग्राम मैनेजर को, वो सब्सक्रिप्शन पे एक्सेस दे देगा ओनर का, ठीक है। नाउ दैट प्रोग्राम मैनेजर कैन असाइन वन मोर ओनर, जो सपोज प्रोजेक्ट मैनेजर है उसके लिए एक ओनर असाइन कर दिया, या फिर कंट्रीब्यूटर असाइन कर दिया, दैट इज हाउ इट गोस। उसके बाद ये लोग इस सब्सक्रिप्शन को यूज कर पाएंगे और उसमें रिसोर्सेज बना पाएंगे। Now I have few resources, let's say I have an IT team or I have some resources जहां पे I do not want, the moment I give access at this level, the moment I give access at this level, सब्सक्रिप्शन पे जो भी एक्सेस दूंगा ना मैं, लेट्स से मैंने किसी को यहाँ पर ओनर का एक्सेस दिया है इस सब्सक्रिप्शन पे, ही इज एन ओनर, एडमिन यूजर इज एन ओनर, so he will be an owner by default on this resource group and on these resources, all of the, and not only on this resource group, for on this resource group also, and by default these resources also, this resource group also, this resource group also, हर एक resource group पे, इस subscription में जितने भी resource group पे आएंगे सब पे वो by default owner बन जाएगा if I have given him access owner on this subscription level. Now let me explain it to you कि resource group होते क्या है. I'll go to this portal and I explain it to you first. So this is my subscription, fine, but I cannot create anything directly on subscription. Where I have to create a virtual machine वगैरह कुछ बनाना है ना, तो I will have to have one resource group. Hence we have resource groups. Resource groups क्या होता है, उस subscription को divide कर रहा है वो. Its subscription could be, let's say I have company in Pune, I have a company in Mumbai, I have a company in Pune. Subscription क्यों होता है? Majority of the time billing के लिए होता है कि मैं देखना चाहता हूं कि मेरे पुणे की ब्रांच से कितना मैं एक्सपेंस ये कर रहा हूँ, कितना एक्सपांड ये कर रहा हूँ, उसको कितना एक्सपैंड कर रहा हूँ, बिजनेस को कितने एक्सपेंसेस है, कितनी कमाई है, तो मे बी मेरा परचेस और ये सब क्या है, कमाई वगैरह क्या है, उसके लिए तो दूसरा मैकेनिज्म है, बट मैं अज्योर पे उसमें से कितना स्पेंड कर रहा हूँ, बिलिंग में कितना आ रहा है। लेट्स से आई एम अर्निंग 1 लाख रुपए फ्रॉम दैट ब्रांच और मेरा अज्योर का बिल ही 1 लाख रुपए 20,000 आ रहा है उस ब्रांच का, तो इट्स ऑफ नो यूज फॉर मी। So to have that कि proper billing हर branch की या किसी भी base पे, if it could be branch based, it could be application, maybe मेरा एक ही branch है but मैं multiple application चला रहा हूँ, ठीक है, तो कौन सा एप्लीकेशन मुझको अच्छा रेवेन्यू दे रहा है और किस पे मैं कितना एक्सपेंड कर रहा हूँ, इसके लिए आपके पास होता है सब्सक्रिप्शन। अदरवाइज यू कुड हैव वन सिंगल सब्सक्रिप्शन और सारे काम आप उसमें चला सकते हो, बट लाइव एनवायरनमेंट में अच्छी कंपनियों में ऐसे कभी भी नहीं होगा। हर छोटे मोटे उनके सब बिजनेस के लिए भी एक अलग सब्सक्रिप्शन होगा, ब्रांच के लिए एक अलग सब्सक्रिप्शन होगा, ताकि बिलिंग में इनके लिए काफी इजी हो। सब्सक्रिप्शन इज नथिंग बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज रिलेटेड टू योर बिलिंग। उस सब्सक्रिप्शन में आप देख सकते हो आपने कितना एक्सपेंड किया है, कितना स्पेंड किया है पैसा, कितना चीजों को एक्सपैंड किया है, कितना आप लोगों का बिलिंग पेंडिंग है, कॉस्ट एनालिसिस देख सकते हो, कॉस्ट अलर्ट्स लगा सकते हो, यू कुड पे योर बिल फ्रॉम हियर, सारी चीजें आप सब्सक्रिप्शन से कर सकते हो, इसलिए यू रिक्वायर्ड अ सब्सक्रिप्शन। बट टू क्रिएट अ रिसोर्स यू रिक्वायर्ड अ रिसोर्स ग्रुप। रिसोर्स ग्रुप कम्स अंडर अ सब्सक्रिप्शन। ये सब्सक्रिप्शन है, इसके अंडर रिसोर्स ग्रुप्स आते हैं, कीप दिस इन योर माइंड। नाउ व्हेन आई से आई हैव सब्सक्रिप्शन, ठीक है पुणे ऑफिस के लिए है, तो मैं अलग से क्यों बनाऊं फिर। बट सब्सक्रिप्शन पे क्या होगा ना कि मैंने सब्सक्रिप्शन पे किसी को ओनर बना दिया तो उसका कंप्लीट एक्सेस होगा। अब यहाँ पर कोई एचआर के ये है, सपोज यहाँ पर कोई सर्वर्स है एचआर से रिलेटेड, यहाँ पर है एडमिन डिपार्टमेंट से रिलेटेड, यहाँ पर है हमारे कोर आईटी वालों के, यहाँ पर है फाइनेंस वालों के, काफी क्रूशल है इसमें, लोगों की सैलरी स्लिप होगी, बहुत सारी चीजें होगी। आई डू नॉट वांट एनी आईटी पीपल और एनी एडमिन पीपल टू बी एबल टू गो टू फाइनेंस वाला डॉक्यूमेंट। यहाँ पर मे बी कुछ कॉन्फिडेंशियल होगा, लीगल वालों का होगा, लीगल वाले तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि फाइनेंस वाले भी आकर यहाँ पर देखें, यहाँ पर अकाउंटिंग वालों का होगा, राइट। सो दीज गाइज डू नॉट वांट ईच अदर टू सी, एक दूसरे के पीसीज वगैरह या काम करें, इनके एडमिन भी नहीं चाहते, इसलिए रिसोर्स ग्रुप का कॉन्सेप्ट आता है कि एक सब्सक्रिप्शन में पुणे ब्रांच में भी I will have HR department, I will have admin department, I will have IT department, I will have finance department, I will have legal department, I will have account department.
तो इसलिए हम लोगों को सेग्रीगेट करना होता है अंडर रिसोर्स ग्रुप। अब इस एचआर में सारे रिसोर्सेज हो गए एचआर के, इस फाइनेंस में सारे रिसोर्सेज हो गए फाइनेंस के। इज इट क्लियर गाइस दैट व्हाई डू वी हैव रिसोर्स ग्रुप? एंड रिसोर्स ग्रुप कम्स, resource groups, they come under subscription. Is it clear? Yeah, got it. So if I have an owner on this subscription, let's say I'm calling this as Pune subscription. For your understanding, if I'm calling this as Pune subscription. So if I have an owner on Pune subscription, he will by default be by default owner on HR subscription, he will be owner on finance and legal and admin. तो ये इस तरह का रोल किसको दिया जाएगा? मे बी कोई डायरेक्टर, कोई वीपी वगैरह, किसी ऐसे चीज को जिसको बाय डिफॉल्ट, किसी ऐसे पर्सन को जिसको बाय डिफॉल्ट सबका एक्सेस मिल जाए तो कोई इश्यू नहीं है। Otherwise you will not have an owner on subscription. You can directly have an owner on your resource group also. Is it clear guys? It is not necessary कि आप इसी हायरार्की में आओ. You can decide कि मैं सब्सक्रिप्शन पे कोई भी ओनर नहीं रख रहा हूं, and you can directly come to this resource group. Obviously who can do that? जिसके पास ये पूरा एक्सेस हो. तो बाय डिफॉल्ट तो सब्सक्रिप्शन का एक्सेस किसी ना किसी एक के पास तो होगा, किसी मैनेजर के पास नहीं तो एटलीस्ट जिसने परचेज किया किसी ना किसी के पास तो होगा ही, and he will only be able to do this. So they can create a resource group, और उस रिसोर्स ग्रुप पे जो है एचआर का जो हेड है उसको एडमिन वहां पर ओनर बना देगा, फाइनेंस वाले को उस पे ओनर बना देगा, लीगल वाले हेड को उस पे ओनर बना देगा. So by default they are, once they are owner here, they are owner on all resources, existing resources and upcoming resources. जो भी resources HR में बनेंगे, HR resource group में बनेंगे, the person who is owner on the HR resource group itself will be an owner by default on all those resources. Is it clear guys? Yes. So in this one, how I have described or distributed, we will explain that, and then will be done for today's session. ज़्यादा ये नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा downloading नहीं चाहिए, ठीक है? Anyone has any questions? यहाँ तक जो discuss किया हम लोगों ने इसमें, Azure Active Directory we discussed, RBAC we discussed, किस तरह से inherit होता है role we discussed that. One more thing, let me explain it to you quickly. Let's say I want to give access. एक काम करता हूँ मैं, इन सबको जो है ना access दे देता हूँ, but किस level का? यहां पर मैं देता हूं एक्सेस रीड ओनली, ठीक है? So the moment you are read only access here, you have read only access here, you have read only access here, you have read only access here, and all resource group. So this admin user has read only access on this subscription. So by default this admin user will be read only on this admin department. But here what I want कि ये admin user जो है, he should be an owner on this resource group. So I can do that also. इसको मैं यहाँ पर रीड ओनली रहने दूंगा, जिसकी वजह से ये सब पे रीड ओनली भी रहेगा, यहाँ से रीड ओनली इनहेरिट करेगा. बट व्हेन इट कम्स टू दिस रिसोर्स ग्रुप, आई विल मेक हिम एन ओनर हियर ऑन दिस रिसोर्स ग्रुप. मैं उस एडमिन यूजर को ओनर बना दूंगा. So now he will have access on this resource group as an admin on and all resources under this resource group. But when it comes to subscription, he will be a read only user. Is it clear guys? Yeah. Yes, sir. Are you sure guys? सबके लिए clear है? Anyone has any question? Please do let me know. सोहेल भाई एक बार प्रैक्टिकल करके दिखा सकते हो क्या आप? हाँ, पोर्टल पे जा रहे हैं ना हम लोग. यस यस, प्रैक्टिकल वो भी आप लोगों से डायरेक्टली रिलेटेड प्रैक्टिकल, सो यू विल हैव दैट अंडरस्टैंडिंग वेरी क्लियरली. बट स्टिल बिफोर आई गो दैट, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस अदर देन दीस गाइस हु कंफर्म्ड? Irfan, Smile, Jivan, do you have any question? I think you were not there on Friday. So Miranda, do you have any question? Jafar bhai, I hope your doubt is clear. Yes bhai. Sana, yes, clear. Shahrukh, Sumaya, Tabriz, Irfan bhai is clear. Vishal, Yogesh. Clear. Just one confusion I had. Yes, Miranda. Yeah, you said when you give access, I mean, like through the subscription, every like as per the owner, everyone gets it.
So here you said I'm giving access to only this, the first part would you said, the owner, you give owner access, right? So only this resource will have it. Right? Yeah, I was not like quite clear about that No part problem. because Let's go to prior portal to and I'll this you show them. Sorry. yeah. Sorry, didn't mean to interrupt. Yes, you still have some questions? No. Yeah, I think that will make it more clear. I'll do that. Anyone else? Any other questions? Wasim bhai? Could you Yes. please repeat this subscription part actually? Okay. Let's do that. Okay. So guys, subscription, I'll quickly repeat it and then we'll go to portal. Subscription क्या है? Subscription is something जिसके अंदर आप लोग अपने resource groups बना सकते हो, जिसके अंदर आप अपने resources बना सकते हो. Why do I need a subscription? Subscription हम लोगों को चाहिए होगा billing purpose के लिए. And why do we need separate subscriptions? Subscriptions अलग अलग हमको इसलिए चाहिए क्योंकि हमारे अलग ब्रांच हो सकते हैं, अलग businesses हो सकते हैं, कंपनी के अंदर जो है अलग applications हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, दिस इज नॉट द रियल टाइम सिनेरियो के लेट्स से स्विगी और जोमेटो का पेरेंट कंपनी एक ही होता या ओला और उबर दोनों को एक ही चीज चलाता, एक ही ओनर होता उन दोनों का, तो एक ही सब्सक्रिप्शन में अगर दोनों को रखता तो दोनों का बिलिंग एक ही जैसा आता. इनका कमाई वगैरह क्या है, ठीक है, उनके अलग मैकेनिज्म्स होंगे जानने के, उनका अलग मेथड होगा अकाउंटिंग वगैरह डिपार्टमेंट, बट इन दोनों ऐप पे मैं टेक्नोलॉजी पे कितना स्पेंड कर रहा हूँ, स्पेसिफिकली अज्योर पे कितना स्पेंड कर रहा हूँ, दैट आई विल नॉट कम टू नो अगर मैं दोनों को एक सब्सक्रिप्शन में रखता हूँ. तो अगर मैं सिंगल ओनर हूँ ओला और उबर का, सो व्हाट आई विल डू, मैं ओला के लिए अलग सब्सक्रिप्शन परचेज करूंगा, उबर के लिए अलग परचेज करूंगा, ताकि मुझको बिलिंग पता चले. ठीक है ना. ओला और उबर ये एप्लीकेशन है, इसके अंदर ऑब्वियसली सर्वर्स होंगे, बहुत सारी चीजें होगी, बहुत सारे रिसोर्सेज बनाने होंगे मुझको. ठीक है, ओला का फ्रंट एंड ऐप है, बैक एंड है, ये है वो है, बहुत सारी चीजें होगी. और एचआर के कुछ सर्वर्स होंगे, ओला में भी तो एम्प्लॉय काम करते होंगे, तो उनके एचआर के भी कुछ सर्वर्स होंगे ना, जहाँ पे डेटा सेव होगा. फाइनेंस के कुछ सर्वर्स होंगे जहाँ पे वो अपना सैलरी स्लिप्स अपलोड करते होंगे, जहाँ पे ओला के एम्प्लॉय सैलरी स्लिप जहाँ से डाउनलोड करे उनके कुछ सर्वर्स होंगे. एडमिन डिपार्टमेंट के होंगे कुछ सर्वर्स, उनके आईटी के कुछ सर्वर्स होंगे, उनके एप्लीकेशन के तो सर्वर्स होंगे, बट एक कंपनी चलाने ये सारे भी तो लगते हैं, राइट. तो ये सब को बनाने के लिए आई कुड हैव रिसोर्स ग्रुप्स के ओला सब्सक्रिप्शन के अंडर आई विल हैव दीज मेनी रिसोर्स ग्रुप्स, ताकि इस रिसोर्स ग्रुप में मैं एक रिसोर्स ग्रुप में सिर्फ मैं फाइनेंस की चीजें रखूं, एक रिसोर्स ग्रुप में सिर्फ अकाउंटिंग की चीजें, और चीजों से मेरा मतलब है डेटा, बट डेटा रखने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए, सर्वर्स, स्टोरेज. तो यहाँ पर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं. ठीक है, सो दिस आई हैव क्रिएटेड. नाउ व्हेन इट कम्स टू एक्सेस के, ठीक है यार एक्सेस देना है, तो इफ आई गिव समवन, एक किसी यूजर को अगर मैं ओला के सब्सक्रिप्शन पे एक्सेस देता हूँ ना, डायरेक्टली सब्सक्रिप्शन लेवल पे अगर मैं ओनर बनाता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट he will be an owner on all the resource groups, finance, HR, admin, ये ऐप वो ऐप, हर एक पे वो ओनर बन जाएगा. ओनर बनने का क्या मतलब है, he can create users, sorry, he can create resources, he can delete resources. Who can create users, by the way? Users पे जब आता हूं मैं, तो which role will create users? Yes guys, which role can create users? Owners. Owner. AD owner. Who's that AD owner? Partially सही है भाई. Yes. Active Directory owner रहेगा तो he can create. Do we have users. owner role in Active Directory? No, भाई it is in RBAC. भाई It is in कंट्रीब्यूटर RBAC. करेगा. Who is that Global, contributor? Was it you, Jafar bhai? यस भाई. Do we have contributor in active? User कहाँ बनता है पहले वो बताओ. Subscription पे बनता है कि Active Directory Active Directory पे बनता है? Active Directory. So do we have a contributor in Active Directory? No. Global Administrator. This is confusing. I know, guys. Correct. You will get confused. Okay. Let me a few questions. Recording in the evening. Fine. Clear. Fine. Yes, guys. So I know it is confusing. But once you go through this, थोड़ा 4-5 बार हम इसको आगे कई बार डिस्कस करते रहेंगे वैसे हम लोग, but at least base clear होना चाहिए. So understand one thing, when I'm talking about creating a user, Active Directory पिक्चर में आ गया. The moment Active Directory is there, हम Active Directory के रोल्स की बात करेंगे. ग्लोबल एडमिन है, ग्लोबल रीडर है, हेल्प डेस्क एडमिन है, एडमिनिस्ट्रेटर है, इनमें से कोई रोल जो है एक आधा यूजर बना सकता है.
यूजर बन गया, अब सब्सक्रिप्शन पे एक्सेस देना है, देन RBAC पिक्चर में आ जाएगा। सब्सक्रिप्शन पे एक्सेस कौन दे सकता है? जो ऑलरेडी एक ओनर है वो दे सकता है। कंट्रीब्यूटर किसी और को एक्सेस नहीं दे सकता है। कंट्रीब्यूटर जो है इसमें चीजें बना सकता है बट एक्सेस नहीं दे सकता है, ठीक है। और रीडर तो ऑब्वियसली सिर्फ रीड कर सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। So the moment I say a user, delete user, a create a group or something ऐसा कुछ, जो existing user है उनका कोई ग्रुप बनाओ, ये सब AD से रिलेटेड है। The moment we talk about AD, it is Active Directory roles, जिसमें ग्लोबल एडमिन आता है, ग्लोबल रीडर आता है, हेल्प डेस्क एडमिन आता है और बहुत सारे जो हमने देखे। Moment I'm talking about subscription IAM, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, सब्सक्रिप्शन पे किसी एक्सेस की बात चल रही है, उसके लिए प्री रिक्विजिट है कि यूजर को होना पड़ेगा। इफ देयर इज नो यूजर, आप असाइन किसको करोगे? राइट, यूजर हैज टू बी देयर। तो यूजर आ गया, उसके बाद सब्सक्रिप्शन लेवल पे काम है ये लोगों का, ओनर वगैरह का एक्सेस देना। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट ओला सब्सक्रिप्शन। तो अगर मैं यहाँ पर किसी को एक्सेस दे देता हूं तो वो बाय डिफॉल्ट हर रिसोर्स ग्रुप पे मिलेगा, विच आई डू नॉट वांट। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन ईदर गो डायरेक्टली और मैं यहाँ पर रिसोर्स ग्रुप को एक्सेस दे देता हूं, एंड वंस ही लॉग्स इन टू दैट portal, he will see only one resource group, nothing else. This option is there कि अगर मैं इस एडमिन यूजर को, इस एडमिन यूजर को जिसको मैंने बनाया है, जिस यूजर को मैंने बनाया है यहाँ पर, इस यूजर को अगर मैं सिर्फ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सब्सक्रिप्शन एज ऑफ नाउ, ठीक है, आई डू हैव दैट एक्सेस, दैट लिबर्टी दैट आई कैन डायरेक्टली कम टू अ रिसोर्स ग्रुप और उसको मैं यहाँ पर किसी तरह का एक्सेस दे दूं। लेट्स से दिस एडमिन यूजर, इफ आई एम गिविंग दिस एडमिन यूजर an owner right only on this admin resource group, so whenever he log into portal उसको सिर्फ ये resource group ही दिखेगा, ये बाकी सारे resource groups दिखने भी नहीं वाले। He will see only this resource group, he will have to work only in this resource group. But if I give access to this subscription and admin access to this admin user, तो उनको सारे resource group दिखेंगे, plus he will be able to add or create and do anything with these resource groups. So 3 conditions I'm talking about. One condition is IAM is subscription पे मैं owner बना दूं, by default it will inherit to all resource group, he could do anything, delete, create, edit, anything, all these resource groups. Second option, that I give owner to that specific resource group, so the moment he logs in he won't even realize, उसको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा resource group है या नहीं। And the third option is I can give this user a reader access on this subscription। यहाँ पर reader दे दिया, इससे क्या हुआ, he will be able to see all these resource group, but यहाँ पर अलग से आके मैंने यहाँ पर इसको admin दे दिया, तो बाकी सबको देख सकता है और इसको control कर सकता है। And how can I do that? I told you that we have IAM on subscription level, we have IAM on resource group level, and then we have IAM on resource level as well. Is it clear, guys? So the third one that you're saying कि जिसपे हम लोग मतलब एक specific resource group को admin role दे रहे, but he'll be able to only like add, delete user in that particular resource group. दूसरा जो है वो access कर सकता है but changes नहीं कर सकता है। Third वाला। Yes, partially is correct, but these users we're talking about, these are not to create users. You said he can create users under this resource group. इस resource group में हम users नहीं बना रहे, user वाला रोल यहाँ खत्म हो गया है। रेड वाला जितना बाउंड्री है ना, ग्रीन से पहले रेड वाली बाउंड्री, यूजर क्रिएशन, डिलीशन, सब कुछ यहाँ पर खत्म हो गया। These users or these roles, it is for resources. When I say resources, creating virtual machine, creating storage, creating some web service, जो मैं उस दिन वेबसाइट बनाकर बता रहा था, ये उनकी बात है। So yes, you got it correct. This user, if I'm giving access, admin access only to this resource group, under this resource group he can create a virtual machine, he can create a storage, but he will not be able to create anything, but not users, resources. Understand one thing, इसीलिए है resource based access control. Whenever we are talking about, इसके अंदर जब भी हम आगे resource based की बात कर रहे हैं, IAM की बात कर रहे हैं, so they are creating resources and not users. Users यहाँ पर खत्म हो जाता है, इस रेड वाली बाउंड्री और ग्रीन बाउंड्री के अंदर यूजर्स खत्म हो जाता है, और यूजर्स बनाना, डिलीट करना, दे आर रिलेटेड टू दीज रोल्स, एक्टिव डायरेक्टरी रोल्स। लेट मी क्विकली गो टू पोर्टल, आई विल एक्सप्लेन इट, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। नहीं है तो कल इसको हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे, डोंट वरी।
but I want you guys to ask, like Miranda is asking. If you do not understand it once, twice, thrice, keep asking. We will do it till the time you guys understand it well. So let me go to portal. Anyone wants this diagram, or should I just remove it? If you want, I can save it and share it, because we have only 8 minutes left now. सेव कर लो उससे असुविधा ठीक, better होगा. I'll save it and I'll share it, don't worry. So I'll go here. I'll explain it to you guys that what kind of accesses I have given it to you, or वो कैसे दिखेगा, or maybe if you guys want, you can try to log in and check. So this is my subscription. What I have done here, who are there in my group yesterday? I think Sumaya, Sana, and Vishal. You guys were there in my group, right? So what I have done here, I come to my subscription. I come here under IAM. I come here and I click add role assignment. Or let's try it with Miranda. I'll create your user and let's try with this. You can log in, and if you want, you can share your screen also. So very first thing what I'll have to do is I will have to create a user. I'm creating a user named Miranda. Either I can send an invitation. This is called creating user. Okay, you send an invitation. आप खुद से बना लो, किसी भी तरह से कर लो. This is creating an invitation. So now this, which ID is being used here when I'm creating a Miranda's user, which role or who's acting here? इस केस में तो सब कुछ मैं एक ही आईडी से कर रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर मैं ग्लोबल एडमिन भी हूँ, यहाँ पर मैं सब्सक्रिप्शन पे ओनर भी हूँ, सब कुछ हूँ. बट अगर ये अलग अलग करना होता तो which ID will come into picture this? I want to create Miranda's user as of now. Active Directory. Active Directory. एक्टिव डायरेक्टरी का कोई भी Azure यहाँ पर Active. यूजर जिसको सफिशिएंट एक्सेस है. सो एक्टिव डायरेक्टरी का जो भी ये होगा, he will be able to create one user here. Miranda, are you logged in with your laptop? No, I'm logged in on the phone. Phone. Okay, so you won't be able to see this. Maybe anyone else can do it, or I'll try to do it. मैं यहीं पर incognito mode पे आप लोगों को इससे करके बताता हूँ, ठीक है. Now, do I want Miranda to understand this one, guys? This is we are talking about roles, ठीक है. Groups को छोड़ दो, groups बाद में ये करता हूँ, but nowhere we are talking about RBAC. यहाँ पर कहीं पर भी RBAC की बात नहीं कर रहे. So I will be having a new employee named Miranda. I'm creating a user. My question is, will Miranda be creating some users? Active Directory पे कोई role देना है Miranda को? So I can give any role from here. But I say नहीं, Miranda का Active Directory से कोई ये नहीं है, उसका service desk में कोई काम नहीं है. She will be directly coming on portal और वहां पर वो resources वगैरह बनाना शुरू करेगी. So I don't need to give any access. और if I think कि हाँ देना है, I could give it from here. If I think कि हाँ उसका भी काम है resource group आकर जो है users बनाना, so I could give any access here. Global admin वगैरह उस टाइप का कोई access दे सकता हूँ. As of now I say कि नहीं, Miranda का Active Directory पे कोई काम नहीं है. I say fine, I create user. User is created now. I'll go to my incognito mode. And I'll share this with you whenever you get your computer or something, try to log in with this. Yeah. This is the password I got from portal. So this is how it will look when Miranda logs in first. Okay. So yeah. I'll have to do it a bit fast. Session khatam hone mein. So this is how it will look once Miranda login. Now she doesn't have any roles under Active Directory. So maximum if she could do something is she could see these users. उसके अलावा कुछ नहीं कर पाएगी. She won't be able to create new users, no delete. Same just जैसे हमने पहले देखा था.
When it comes to subscription, she doesn't have any access. She won't be able to create any virtual machine, nothing. So this is how a first initial looks is there once a user logs in. Now what options do I have? I think, okay, what Miranda will be doing under my subscription, under this subscription, I want to, let's say Miranda is being hired for some application for some so I'll create one resource group. Now see, I have these many resource groups under my subscriptions. Okay, so I'm creating one resource group now under this subscription, my subscription. I'm naming it Miranda. It could, यहाँ पर ये हो सकता है आपका, what you say, application का नाम हो सकता है, या जिस डिपार्टमेंट के लिए आप काम कर रहे हो वैसे कुछ हो सकता है. It could be anything. ठीक है, it could be सर्विस डेस्क, ऐसे कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पर हम अपने खुद के नाम यूज कर रहे हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो आई हैव क्रिएटेड दिस रिसोर्स ग्रुप. So this is how I can go to that particular resource group. Now I'm not going to subscription, and you see I have resource group पे भी IAM है मेरे पास. I'll add a role, and this one I know Miranda is heading this project, or she will be doing everything. So I want to make her owner on this resource group. She is responsible for everything. Here I can select her name. अब तक मैंने Miranda का नाम select ही नहीं किया कहीं पर, right? So here I can select her name. And why can I see her name here? क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी में someone created this name. If I did not have that name, ये यहाँ पर appear ही नहीं होगा. I hope you guys are getting it. Yes, sir. Cool. Okay, review and create. Now Miranda wasn't able to see anything. Now when she logs in, maybe I'll have to log off and log in. I'll see. या कई बार चल जाता है. So I'll see if I can see any resource groups. ऊपर से रिफ्रेश करो. It's better I log off and log in then. हाँ, लॉग ऑफ लॉग है, करेक्ट. No, still some error. Trying to release the details. Okay. So this is how she will see. Only 1 minute is left, so we stop here. Tomorrow we'll start from here. इसके बाद मैं बताऊंगा कि when I give her access, now she has access only on this one. इसके बाद what will I do? I'll give her access on subscription. So she will be able to see all these resource groups, but she will be able to control only her one own resource group. ये सब दिखेंगे read only में, but access होगा सिर्फ इसके एक खुद के resource group पे. But we'll do that tomorrow. Session is about to finish. ठीक है guys, any questions? So do let me know. Group में ये कर दो. I'll post that picture in the group. Thank you, sir. Okay, no problem. थैंक यू Bye. सोहेल.